प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सब ग्रुप के बारे में एंड कुछ टेस्ट थे सब ग्रुप शो करने के लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थियरम ऑन सब ग्रुप। कुछ थियरम गिवन है, उन थियरम का हम इस लेक्चर में प्रूफ करेंगे। थियरम 1 है, a set generated by A is subgroup. This form is subgroup. Let G be a group and A belongs to G. Then this A means a set generated by A is a subgroup of G. Proof. Let A belongs to G, where G is a group. So we know that this set generated by A can be written as A to the power 1 such that n belongs to Z. हम ये पढ़ चुके हैं। This is called generation of element. That is, this set is generated by A. So ये पूरा सेट A से जनरेट हो रहा है, तो इसमें एलिमेंट A तो होगा ही होगा। It since A belongs to this A, we say A is not empty. इसमें हमें शो करना है this A, that is this set form a subgroup. This is a non-empty. तो इस सेट में कैसे एलिमेंट होंगे? A स्क्वायर, A क्यूब एंड सो ऑन, A टू द पावर R, A टू द पावर S टाइप के एलिमेंट होंगे। तो दो एलिमेंट मैं इसके ले लेता हूँ। सपोज A टू द पावर R comma A to the power S belongs to belongs to A, where R comma S belongs to Z. Now we shall show A to the power R into A to the power S का all inverse belongs to this set. तब ये मैं कहूँगा वन स्टेप टेस्ट से दिस इज सब ग्रुप। इसको शो करना है, दैट इज A to the power R, A to the power S to the power -1 equals to A to the power R, A to the power -1 to the power S। इसे मैं लिख सकता हूँ A to the power R, A to the power -S। इसको मैं लिख सकता हूँ A to the power R -S. This belongs to this set. Why? Since R minus S belongs to Z. So it imply AR into AS to the power -1 belongs to this set. Thus by one step subgroup test, this is subgroup of G. Now theorem 2. Theorem 2 में intersection of two subgroup is subgroup. That is, if H and K be a subgroup of G, it implies H intersection K is a subgroup of
जी। इसका प्रूफ करेंगे हम। लेट H एंड K बी सब ग्रुप ऑफ Z. It implies E belongs to H and E belongs to K. दोनों सब ग्रुप है इसके, तो इसमें एक आइडेंटिटी तो होगा ही होगा, इसमें भी आइडेंटिटी होगा, बट दोनों जो सब ग्रुप है जी के और आइडेंटिटी जो होती है वो यूनिक होती है, तो वही आइडेंटिटी एच की होगी और वही आइडेंटिटी मेरी के की भी होगी। तो इट इम्प्लाई ई बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एच इंटरसेक्शन के इज नॉन एम्प्टी। नाउ अब हमें एक वन स्टेप टेस्ट लगाएंगे इसमें और शो करेंगे एच इंटरसेक्शन बी इसका सब ग्रुप होगा। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। इट इम्प्लाई ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू के। इट इम्प्लाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच and AB inverse belongs to K, since H and K are subgroup of G. तो AB inverse भी H में आ रहा है और AB inverse K में आ रहा है, so it imply AB inverse belongs to H intersection K by one step subgroup test. We can say H intersection K is subgroup of G. This is proof. Note, intersection of two subgroup के लिए था. Now intersection of infinite numbers of subgroups is subgroup. आप ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप के इंटरसेक्शन के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, बट theorem is not valid for union. For example, union of two subgroup may not be subgroup. For example, Z equals to 0, 1, 2 and so on, -1, -2 and so on. This is group under addition. Let this is a subgroup which is generated by 2, 0, 2, 4 and so on, -2, -4 and so on. ये मेरा एक सब ग्रुप है Z का. Similarly, a set generated by 3 form a subgroup under addition. इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे, 3 से जनरेट हो रहा है तो 3, 6 एंड सो ऑन. सिमिलरली यहाँ -3, -6 एंड सो ऑन. बोथ आर 2 and 3 are subgroup of Z. थियरम फर्स्ट से हमने लिखा है ये. अगर थियरम फर्स्ट की बात करें तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं द सेट जनरेटेड बाय 2 इज सब ग्रुप ऑफ Z. सो दिस बोथ आर सब ग्रुप. नाउ 2 यूनियन सेट जनरेटेड बाय 3, क्या ये सब ग्रुप होगा? तो इसमें क्या है, एलिमेंट 2 भी है,
इस यूनियन वाले सेट में, सिंस 2 बिलोंग्स टू 3 and 3 also belongs to this 2 union 3. बट अगर ये मेरा सब ग्रुप है तो क्लोजर एक्सियम होल्ड होनी चाहिए, 2 + 3 मस्ट बी बिलोंग्स टू this, but this is not belongs to 2 union 3, so this is not subgroup. थ्योरम 3, अगर दो सब ग्रुप के यूनियन को सब ग्रुप होना है तो कुछ सर्टेन कंडीशन के लिए सब ग्रुप होगा, देख लेते हैं. इफ H and K are subgroup of Z, then H union K is subgroup of Z if and only if one is contained in other. That is, if H and K be the subgroup of Z, then H union K is subgroup of Z if and only if या तो H K में कंटेंट हो या K मेरा H में कंटेंट हो, तभी मैं कहूँगा ये मेरा H यूनियन K G का सब ग्रुप होगा. प्रूफ, लेट H and K be the सब ग्रुप ऑफ G. अब हमें क्या करना है, ये इफ एंड ओनली इफ केस है, एक P इम्प्लाई Q एंड Q इम्प्लाई P, इस टाइप से हमें प्रूफ करना पड़ेगा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से. लेट, एक बार मान लेता हूं मैं, लेट H इज कंटेंड इन K, इट इम्प्लाई H यूनियन K इक्वल्स टू K, so it imply H union K is subgroup of Z since K is subgroup of Z. H union K, K के इक्वल में K मेरा सब ग्रुप है तो H union K भी सब ग्रुप होगा. Let K is contained in H, so H union K is equal to H, so H union K is subgroup of Z. Why? Since H is subgroup of G, यहाँ given है. यहाँ से हमने ये लिख लिया. Now conversely, अब हमें शो करना है, ये तो given है ही, let H union K is subgroup of Z, then we to show we shall show, या this is contained in K और या K is contained in H. इसके लिए हम कंट्राडिक्शन प्रूफ यूज करेंगे. लेट H is not contained in K, मान लिया. इसका मतलब क्या है, there exists X belongs to H such that X does not belongs to K, and if K is not contained in H, it implies there exists Y belongs to K such that Y does not belongs to H. सबसेट ना होने की एक कंडीशन हमने यहाँ लगा दी. अगर X इसमें है, ठीक है, यानी H में है, तो ये X इसमें नहीं है, K में नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे भी. अब इन दोनों कंडीशन से देखिए, X क्या है मेरा H में है लेकिन K में नहीं है, Y मेरा K में है लेकिन H में नहीं है, तो X, Y जो है H यूनियन K में तो होगा, ठीक है, क्योंकि X H में Y K में, तो यूनियन में तो ये दोनों आएंगे. X, Y belongs to H union K, it imply X into Y belongs to H union K. Why? H union K is
सब ग्रुप ऑफ जी। सो क्लोज्ड एक्सियम से हमने लिखा है ये, सिंस x into y belongs to H union K, it imply either xy belongs to H or xy belongs to K. Let xy belongs to H. लेकिन H क्या है? H इज ए सब ग्रुप ऑफ G है। ये तो मेन है, ये गिवन है, H एंड K आर सब ग्रुप ऑफ G है। मान लिया एंड x belongs to H by 1, x belongs to H है। There exists x inverse belongs to H, imply करेगा। Why? Because H is subgroup of G, x y भी H में है और x inverse भी H में है। It imply x inverse into x y must be belongs to H, क्योंकि H मेरा सब ग्रुप ऑफ G का तो क्लोजर होल्ड होगा। सो x इनवर्स x into y belongs to H by associative, it imply E into y belongs to H, that is y belongs to H। बट यहाँ पे देखिए y तो H का नहीं लिया है, लेकिन ये y में आ रहा है, दैट इज कंट्राडिक्शन। So our assumption is wrong. Now again let x y belongs to K, अब K के लिए, and y belongs to K from 2, it implies there exists y inverse belongs to K। Why? Because K is subgroup of G। अब देखो it imply x y भी K में है और y इनवर्स भी K में है, तो x y इनवर्स भी K में होगा, because K is subgroup of G। It imply x y inverse belongs to K, since by associative it implies x into E belongs to K, but x is not in K, contradiction। So our assumption, this is wrong। Thus if H union K is subgroup of G, then H is contained in K or K is contained in H। So theorem is completely proved।